Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Vanakkam, Pranam, everyone. We are back again with PT 365. We were discussing issues related to the Constitution. Today, in this video, we'll learn about preventive detention. Recently, the Supreme Court in Banka Sneha Sheela versus State of Telangana case ruled that the provision for preventive detention cannot be invoked on the ground of apprehension of breach of law and order, but in cases where public order is directly affected. A preventive detention order can be passed only if the detention is likely to adversely affect the maintenance of public order. The Supreme Court held that violations of public order and cases affecting it affect the majority of the public, while on the contrary, violation of law and order involve matters of less serious nature. सुप्रीम कोर्ट का कहना है प्रिवेंटिव डिटेंशन तभी इन्वोक किया जाएगा जब पब्लिक एट लार्ज मेजॉरिटी को ही अफेक्ट कर रहा होगा, not only on the breach of law and order. Also, preventive detention should be within the scope of Article 21. Article 21, which is due process of law, which follows due process of law, and it should be consistent with Article 22, जो कि है protection against arbitrary arrest and detention. Preventive detention क्या है ये आर्टिकल 22 के सेकेंड पार्ट में दिया है. हम लोग सीधे आर्टिकल 22 को ही स्टडी करते हैं. आर्टिकल 22 टाइटल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन certain cases. Our constitution guarantees certain rights to the arrested person. First part of Article 22 provides specific rights to person under detention. First part में detained person के detenue के rights mention किए गए हैं. The first one is the right to be informed of the grounds of arrest. किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं, किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रहे हैं. The one who is arresting should tell the detainee. Second, the right to consult a lawyer of one's own choice. अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो you have the right to consult a lawyer, और वो भी आप तय करेंगे किस लॉयर को कंसल्ट करना. Third, the right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest, excluding the time taken during the journey. आप अगर अरेस्ट होते हैं तो विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके सामने प्रोड्यूस करना इज योर राइट, बट 24 आवर्स जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड करता है, वो काउंट नहीं करता है. जब आप कोर्ट में स्टेशन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं वो टाइम से काउंट करते हैं 24 आवर्स. तो 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होता है. फोर्थ, फर्दर द पीरियड ऑफ डिटेंशन कैन नॉट बी बियॉन्ड व्हाट इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट जो ऑथराइज करते हैं पीरियड को, डिटेंशन के पीरियड को इतने इतने टाइम तक डिटेन करना है, उसके बियॉन्ड आपको डिटेन नहीं किया जा सकता. सॉरी, आपको, डोंट टेक इट पर्सनली, आपको इन जनरल whoever is arrested or detained. It may be noted that aforesaid safeguards are not available to किस को ये राइट्स नहीं है. Alien enemies and persons arrested or detained under preventive detention law. Alien enemies यानी कि foreigners who are from enemy country and the person who are arrested or detained under preventive detention law.
अभी देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को, जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 4, 5 एंड 6 में दिया है. The second part of article deals with the preventive detention. In preventive detention, persons are arrested to prevent them from committing a serious crime. अगर लगता है कि आगे वाला पर्सन क्राइम, कोई सीरियस क्राइम कमिट कर सकता है, तो they can be detained. Preventive detention is detention of a person without trial for a limited period when the state suspects that a person is likely to commit a crime or is a threat to the security of the state. If a person is likely to commit a crime, पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन अभी जाके इन नियर फ्यूचर कोई क्राइम कमिट करेगा या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, वो पर्सन को विदाउट ट्रायल फॉर लिमिटेड पीरियड डिटेन कर सकते हैं. Such detention too is subject to some safeguards present in Article 22. Safeguards के प्रोविजन देखते हैं. A person detained on the ground of suspicion shall be detained for maximum period of 3 months. Maximum period for the detention is 3 months. If the government seeks to detain the arrested person beyond 3 months, his detention must be authorized by an advisory body. अगर कोई गवर्नमेंट किसी पर्सन को बियॉन्ड 3 मंथ्स डिटेन करना चाहते हैं, तो उनका डिटेंशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एन एडवाइजरी बॉडी, और उस एडवाइजरी बॉडी में जज ऑफ द लेवल ऑफ हाई कोर्ट कंप्राइज होते हैं. In this regard, the Parliament is given the power to determine by law the maximum period for which a person can be detained on preventive grounds. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम पीरियड को बाय लॉ डिटरमाइन करे जिस ग्राउंड पे पर्सन को डिटेन किया गया है. The detained person must be informed about the reason for his arrest as soon as possible. डिटेन करते वक्त भी उन्हें किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे डिटेन कर रहे हैं वो बताना जरूरी है. इसके लिए एक एक्सेप्शन है जिसमें ग्राउंड्स नहीं बताए जा सकते. State may withhold the facts of preventive detention or such related facts if it considers that to be against the public interest to disclose. जैसे कि किस पर्सन ने इन्फॉर्म किया है, ये फैक्ट अगर बता दो तो उस पर्सन के लिए थ्रेट हो जाता है, तो there is a secrecy maintained, और ऐसे केसेस में state may withhold the facts. The detained person must have the earliest opportunity to present his case before the designated authority. Article 22 clause 7 ये पार्लियामेंट के पावर, मतलब पार्लियामेंट के पावर जो है वो बताता है. Article 22 clause 7 provides that Parliament may by law prescribe the circumstances and the classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory body. अगर किसी पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा डिटेन किया जाता है तो किस सर्कमस्टेंस में और केस के क्लासेस, मतलब क्या क्लास है उस केस का, वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा. और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention.
and the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of clause 4. पार्लियामेंट क्या क्या प्रिस्क्राइब करेगा बाय लॉ? सर्कमस्टेंसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस. सेकेंडली मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, एंड thirdly the procedure followed by advisory board. The acts related to preventive detention have always been controversial for their alleged misuse and human rights violation. Preventive detention is a serious invasion of personal liberty, and the laws related to this necessary evil must be applied very cautiously. It is obvious that whatever act will come, it will be in the controversy because it can be allegedly misused and human rights could be violated. It can seriously invade the personal liberty, and ऐसे evils के अगेंस्ट जो भी लॉ एक्ट फॉर्म होते हैं वो वेरी कॉशियसली अप्लाई करना जरूरी है. Let's see some central government act which is related to this. First one was Preventive Detention Act in 1950. जो अभी नहीं है, it has been repealed. Armed Forces Special Powers Act 1958, AFSPA. Third, Unlawful Activities Prevention Amendment Act 1967, UAPA, which was amended in 2004 and 2008. Fourth, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974, COSA. Fifth is the National Security Act, NSA, in 1980. Sixth, Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act in 1980. Terrorist and Disruptive Activities Act, TADA, in 1985, जो अभी नहीं है वो भी रिपील किया गया है. 8th, Prevention of Terrorism Act 2002, कोटा, ये भी रिपील किया गया है. The Unlawful Activities Prevention Amendment Act 1967, UAPA, which passed to make powers available for dealing with activities which are directed against integrity and sovereignty of India. Integrity and sovereignty of India के against जो भी activities दिखती है उसके साथ डील करने का पावर UAPA के अंदर आता है. The act was amended in 2008 after December 2008. December 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, incorporating which further provisions against terrorist activities which meet commitments made at the Financial Action Task Force, FATA, that is Financial Action Task Force. इसका काम है to combat money laundering and terrorism financing. So that's all for now. Or the Criminal Procedure Code 1973, that is CRPC, इसके section 151 में preventive detention mention किया है. Thank you all. Have a good day. Stay safe, stay healthy, study more, drink more water. Happy summer.